Good morning, children. Children, now we have come to the end of this chapter. This is the last topic for today, that is formation of a company. Already we have covered all the important topics of this chapter. Now this is going to be the last topic for this chapter. And one more topic is there, choice of form of a company, but that has been deleted by the board for this session. So, formation of a company is going to be the last topic that we will be studying, and after that, you'll be required to complete all your notes and send the images of your notes to me. I have already given you my number. Next is, after you finish the chapter, after you finish preparing your notes also in your notebooks, I shall be giving you one assignment which will consist of the question answers, important question answers of this chapter. So you will be required to answer all those questions, which will basically be essay type questions. So you'll be required to answer all those questions in your notebooks and send me the images of that assignment also. You'll have to share the images of that assignment. And after that, I'll be giving you a test, and an online test you'll be given, like I did in unit 1 also. So I'll be giving you that online test on Monday. So remaining days of this week, you will be required to complete all the notes of this chapter. Then tomorrow you'll be given an assignment which you'll have to complete, and Monday you'll have to take that online test, which will consist of MCQ, multiple choice questions. So let's now start this last topic of the chapter, which is formation of a company. Company, we mean joint stock company, that you had studied yesterday. So like all other business enterprises which you have studied so far, you know that their formation is very easy. Each of those companies, be it proprietorship, partnership, joint Hindu family business, so we had seen that their formation was very simple. There was no legal procedure involved. People can start that type of business enterprise at any time as per their convenience, as per the available of resources. But when it comes to the company or joint stock company, here we have seen that its formation is really difficult, because a company is a legal entity and it involves an elaborate legal procedure. Lots of documentations have to be registered. So for the formation, a number of steps are involved which have to be followed to give existence to a company. So now we are going to study what those steps are. The different stages which are involved in the formation of a company are promotion stage, incorporation stage, capital raising stage, commencement of business stage. While discussing the company and the features, we had seen that there are two types of company, private company and public company, and a public company can function right after incorporation stage. अगर प्राइवेट कंपनी है तो पहला उसका प्रमोशन स्टेज होगा. प्रमोशन स्टेज वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट प्रमोशन स्टेज इज. Promotion stage, after that incorporation stage, and soon after incorporation stage the company can start functioning. तो प्राइवेट कंपनी को फर्स्ट 2 स्टेप्स से ही गुजरना होता है और उसके बाद उसका फंक्शनिंग स्टार्ट हो सकती है. बट इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, after incorporation stage, it has to go through capital raising stage, and then it will be given a certificate of commencement of business. Then only it can start its operations. So you have to keep that thing in mind, that the basic difference between private company and the public company is private company will have to undergo the first 2 stages and can start functioning after that. But for a public company, it has to go through all the 4 stages mentioned here: promotion stage, incorporation stage, capital raising stage, and then it can commence its business. It can have commencement of business stage. So let's first see the promotion stage.
What is promotion? The term promotion refers to the sum total of activities by which a business enterprise is brought into existence. Promotion consists of the business operations by which a company is established. So कंपनी को एक शेप देने के लिए, एक फॉर्म देने के लिए, उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए पहली स्टेज होती है प्रमोशन स्टेज. And people who are involved in performing those activities, they are called promoters. So a promoter is one who undertakes to form a company with reference to given object and to set it going, who takes the necessary steps to accomplish that purpose. So anyone who develops an idea कि एक बिजनेस एंटरप्राइज इस्टेब्लिश होनी चाहिए, एक जो आइडिया डेवलप करता है उस पर पूरा एनालिसिस करता है एंड देन टेक्स ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू डेवलप अ कंपनी, टू इस्टेब्लिश अ कंपनी, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रमोटर. दैट पर्सन इज कॉल्ड अ प्रमोटर. एंड दिस स्टेप जिसमें फर्स्ट द पर्सन हैज़ टू डेवलप एन आइडिया, अ बिजनेस प्लान कि क्या बिजनेस हो सकता है, एंड देन अ थॉरो एनालिसिस, then that what is the feasibility, right? So then after this all the documents have to be prepared, then the person takes it to the registrar. So this stage, which involves number of steps, is called promotion stage. Now let's see what different steps are involved at this stage. Now functions of a promoter or the different steps that are involved at promotion stage are: identify business opportunity, that is the first step. At this step what the promoter has to do, has to first assess that what are the prospects, क्या business के कौन से क्या अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में, क्या बिज़नेस किया जा सकता है, क्या कौन सा मार्केट के हिसाब से कौन सा प्रॉफिटेबल बिज़नेस हो सकता है, किस बिज़नेस के लिए सारे जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो मीट आउट करना इजी है. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. देन कंडक्ट फीजिबिलिटी स्टडी. फीजिबिलिटी स्टडी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना कि हाउ जो बिज़नेस का जो आइडिया दिमाग में आया है वो कैसे फीजिबल है, उसको कैसे किया जा सकता है. एंड दैट कैन बी परफॉर्म्ड by doing three kinds of analysis. One can be technical feasibility. Technical feasibility क्या है कि इसमें that promoter has to see whether the raw materials, the technology and the expertise which is needed for the project, whether it is available easily or not. So that is called technical feasibility. Another type of assessment can be financial feasibility. And what is financial feasibility? The funds required for the project are estimated कि उसमें पूरा एक उसका प्रोजेक्ट में कितने फंड्स रिक्वायर्ड होंगे, उसका पूरा एनालिसिस जो किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल फीजिबिलिटी. द थर्ड टाइप ऑफ असेसमेंट इज़ इकोनॉमिक फीजिबिलिटी. A project may be technically and financially feasible, but it may not be profitable. अब ये असेसमेंट कर लिया कि ठीक है, ऑल द रॉ मटेरियल्स, द टेक्नोलॉजी, जो भी उसके रिक्वायरमेंट है वो सारे अवेलेबल हैं. फंड्स भी असेस कर लिए एंड फंड्स कैन ऑल्सो बी जनरेटेड. But then another type of assessment has to be done to make out whether this project is going to result into profits or not. उसका ये देखना है कि ये ठीक है, इस्टेब्लिश तो हो सकता है, उसके ऑपरेशंस हो सकते हैं, बट इसका जो रिज़ल्ट होगा वो प्रॉफिट देगा या नहीं. तो दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज़ अप्रूव द नेम. देन द प्रमोटर हैज़ टू थिंक ऑफ सम नेम फॉर द कंपनी कि कंपनी का क्या नाम रखा जाना चाहिए. एंड टू गेट इट रजिस्टर्ड क्या करना होता है प्रमोटर को? that suggestion has to be forwarded to the registrar of company. Let me tell you one important thing here, that for establishment of a company, as I told you, it is a legal entity and it has to follow legal procedure. Government का इसमें involvement होता है. तो कैसे होता है government का involvement? That the central government, under the central government there is a ministry which is called Ministry of Corporate Affairs. We call it MCA.
गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जो कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट और कंपनी के फंक्शनिंग को गवर्न करती है. देर इज़ ओनली वन मिनिस्ट्री विच इज़ अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. देन स्टेट लेवल पर क्या होता है, ईच स्टेट हैज़ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. हर स्टेट में, हर स्टेट गवर्नमेंट में एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है, जहाँ हर स्टेट के जो कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट होते हैं वो मैटर्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंडर जाते हैं. सो एट प्रमोशन स्टेज, like you undergo you perform feasibility study. सारा आप assessment करते हैं कि ये ठीक है, ये इसकी हमने टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक कर ली, फिनेंशियल फिजिबिलिटी चेक कर ली, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी चेक कर ली. देन वी हैव टू सजेस्ट सम नेम्स विच हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. हम कुछ नाम रखेंगे कंपनी का, तो हमें उसके लिए एटलीस्ट 3 ऑप्शंस देने होते हैं रजिस्ट्रार को. क्योंकि क्या इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम जो कंपनी का नाम सजेस्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो. वो ऐसा ना हो कि रजिस्ट्रार के पास वो उस नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी रजिस्टर हो तो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा. तो वो रिजेक्शन ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक साथ 3 नाम सजेस्ट करते हैं. सो देर इज़ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन ऑफ द नेम्स selected, approved, right? So that is the step where the name of the company has to be approved by the registrar of companies, ROC. Then select the subscribers. Promoter chooses the person who will sign the memorandum of association. ये क्या है, इसमें subscribers means हमें the promoter has to select the people who will act as the board of directors. Initial board of directors होते हैं mainly, जो हम subscriber उसके लिए select करते हैं, and they have to sign a memorandum of association. So ये एक next step इसका ये हुआ कि हमें उन directors का selection करना है, and they will be required to sign memorandum of association. Next step comes prepare the documents. इसके बाद हमें सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है. डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, डॉक्यूमेंट्स हम आगे पढ़ेंगे कौन से होते हैं. हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एंड अनदर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस. दीज 3 documents are required. Memorandum of association, article of association and prospectus. These 3 documents have to be prepared. And then another step involved in promotion stage is appoint professionals. Appointing professional means that the merchant bankers, the auditors who will assist in the preparation and filing of the necessary documents. हम प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करेंगे. ये प्रोफेशनल क्या करेंगे, जो हमारे ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रिपरेशन ऑफ एसोसिएशन, ये सारे प्रिपेयर करने में हमारी मदद करेंगे. सो दीज आर ऑल द स्टेप्स एट प्रमोशन स्टेज. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. Let's now proceed to the second stage, that is incorporation stage. Incorporation stage में क्या होता है, like we have prepared all the documents. These documents they are taken to the registrar of company. Registrar of company को हमें क्या करना होता है, वहाँ पर हम सारी जो documents होते हैं वो फाइल करने होते हैं, साथ में एक application देनी होती है. And I told you it involves this formation of company is quite an expensive process. So here a registration fees is also charged. तो हमें फीस, सारे डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन, ये सारे रजिस्ट्रार को देने होते हैं. रजिस्ट्रार उन सबको स्क्रूटनाइज होते हैं वहाँ सारे वो डॉक्यूमेंट्स, एंड सारे अगर नेसेसरी कंडीशंस मीट आउट होती हैं, देन द नेम इज़ रजिस्टर्ड इन the company is registered under Companies Act 2013. रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर कर लेगा, अप्रूव कर देगा. So this stage is called incorporation stage. A company is said to be incorporated when it fulfills the formalities of registration and it can obtain certificate of incorporation. रजिस्ट्रार क्या करेंगे, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, फीस मिल गई है, सारे MOA मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड रिटन कॉन्सेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, इफ़ दे आर ऑल
produced, if they are found correct by the registrar, then a certificate of incorporation is issued. अब ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्या होगा? अगर प्राइवेट कंपनी है तो इस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद ऑपरेशंस कंपनी के स्टार्ट हो जाएंगे. अगर पब्लिक कंपनी है तो इस स्टेज के बाद उसको एक और स्टेज पे जाना होगा, कैपिटल वाले स्टेज पे जाना होगा, और उसके बाद जाकर उसको जब लाइक इट हैज़ टू go through capital subscription stage, and then it can be given commencement of business certificate. Now the steps which are involved in the incorporation of a company stage are approval of name. I have told you this, that then 3 names are suggested. The registrar has to check whether the name already exists or not. If it does not exist already and us naam ko if the registrar finds appropriate, then this name can be approved. Next is filing of necessary documents. 3 types of documents I have told you already: the memorandum of association, article of association, and prospectus. Besides that, other documents are also there. Notice has to be given. Then the agreements which the company proposes to enter into with any individual firm or body incorporate regarding its management, that is the agreements. Then a list of persons, that is the list of people who agreed to act as the directors. So this list should contain full name, age, occupation, permanent address of each of the member. Then a written consent of each director to act as such with his signature. एक written consent होगा जिसमें जो भी हमने जो लोगों को जो सब्सक्राइबर्स हमने उसमें सेलेक्ट किए हैं, जो who agree to act as directors, उनका पूरा consent होगा, वो अपने साइन उसमें करके वो देंगे. That document has to be produced. An undertaking which has to be signed by each director to take up and pay for qualification shares. कि जो डायरेक्टर्स हैं उनके जो शेयर्स होंगे उसकी अंडरटेकिंग साइन करके देंगे वो. अ कॉपी ऑफ द लाइसेंस and a statutory declaration. These many documents, they have to be filed. So this is the second step of incorporation stage. Then comes payment of fees. After all the documents are ready, सारे documents prepare होके file कर दिए गए हैं, उसके बाद जो भी उसकी वहाँ पर fees, prescribed fees होगी, that has to be deposited. The amount of registration fee varies according to the amount of authorized capital of the company. ये फिक्स फीस नहीं होती है, वो जो भी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पर उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी फिक्स करता है रजिस्ट्रार. Then the last step of this stage is certificate of incorporation. If everything is found okay, then a certificate of incorporation is issued by the registrar. The documents, I have already told you the main 3 documents. हमने देखा है अभी कि बहुत सारे documents थे जो मैंने भी आपको बताया है incorporation stage पर, but the 3 main documents are memorandum of association, article of association, and prospectus of association. ये फर्स्ट 2 जो हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, these are compulsory for private company also. Prospectus is not mandatory for a private company, but it is for a public company. Okay, so first is the memorandum of association. The memorandum of association is a document which contains the fundamental rules regarding the constitution and activities of the company. I've already told you this. Memorandum of association is the principal or most important document of a company. It defines the objects and powers of a company and the company's relationship with the outside world. It is the charter of the company which defines the reason for its existence. It lays down the area of operation of the company. It also regulates the external affairs of the company. So ये सारी details जो हैं ये हमारे memorandum of association document जो है उसमें हमें mention करनी होती हैं.
Next is Article of Association. The Article of Association contains regulations regarding all matters concerning the internal affairs of the company. एक्सटर्नल अफेयर्स की डिटेल्स हमें किस में देनी होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. और जो इंटरनल अफेयर्स मींस जो ऑपरेशंस हैं कंपनी के, इंटरनल ऑपरेशंस, एम्प्लॉयज़ का जो मैनेजरियल स्ट्रक्चर है, बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इंटरनल मैटर्स की, वो सारी हमें देनी होती हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. So article of association are the bylaws of a company. They contain rules and regulations for the management of the internal affairs. Alteration of article of association is done by passing a special resolution. अब हमने ये इसमें जो internal अपने जो bylaws कंपनी के बनाए हैं, इसमें भी हम ऐसा नहीं है कि कभी भी चेंज कर लें. उसके लिए हमें एक रेजोल्यूशन पास करना होता है. वो जब रजिस्ट्रार के थ्रू पास होता है उसके बाद हम इसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं. इंटरनल मैटर्स के भी जो हमने अगर कुछ रूल्स अपने बनाए हैं कंपनी के कि हमारे कैसे कंपनी की फंक्शनिंग होगी, उसके भी हमें पूरे हमारे स्पेसिफाइड होंगे. एंड इफ़ यू गो फॉर मेकिंग एनी चेंज इन दैट, देन अ रेजोल्यूशन हैज़ टू बी पास्ड. Let's now see the third important type of document which is mandatory in case of a public company but not for a private company, and that is company prospectus. Prospectus is a document issued to the public for inviting subscriptions for shares and debentures. Prospectus में हमें क्या होता है कि सारी डिटेल्स देनी होती हैं जिससे पब्लिक को हमें अट्रैक्ट करना होता है so that they can invest capital in the form of shares and debentures. It contains details about past history, present operations, and future prospects of a company. Contents of a prospectus, it has elaborate contents. बहुत सारे इसमें होते हैं. It mentions main objects of the company, share capital, terms of the present issue, particulars of the issue, management personnel, minimum subscription, opening of the subscription list, application and allotment monies, particulars of options to subscribe for shares and debentures, shares and debentures issued for consideration other than cash, share premium, underwriters, preliminary expenses, promoters, details of business, property acquired, restriction on articles, time and place of inspection, material contracts. So these many details are mentioned in the prospectus of a company. Now, again I'm telling you that after incorporation stage, a private company can directly function, but the public company now has to cross the third stage, that is capital raising stage. So at capital raising stage, what happens, a public company can raise the required funds from public by means of issue of shares and debentures. यहाँ पर क्या होगा, पब्लिक कंपनी को हैज़ टू डेवलप फंड्स कैसे डेवलप होंगे, व्हेन इट इनवाइट सब्सक्राइबर्स, पब्लिक को इनवाइट करेंगे कि वो शेयर्स के फॉर्म में कंपनी में अपना कैपिटल इन्वेस्ट करें, अपना पैसा इन्वेस्ट करें. So by means of shares and debentures. For doing the same, it has to issue prospectus. Now, how can a public company invite people? That it can do by means of producing all the details in the prospectus. Prospectus में सारे details देंगे जिससे public attract होगी and they will become subscribers. They will invest their money in the form of shares and debentures. Now, this stage also follows several steps which are SEBI approval for raising capital. SEBI का इसमें approval चाहिए होगा कि हाँ इस shares और ये इस तरह public इसमें invest कर सकती है, उसके लिए SEBI का approval चाहिए. A company must ensure that the proposed issue of shares debentures in accordance with the guidelines prescribed by the Securities Exchange Board of India. That is what we call as SEBI, Securities Exchange Board of India. So SEBI has to approve this
fundraising, capital raising step of the company. Next comes filing of prospectus. A copy of the prospectus or a statement of prospectus is filed with the registrar. Again, I'm telling you, this is mandatory for a public company, not for a private company. Next comes appointment of bankers and brokers. Here, the bankers, the brokers, the secretaries, auditors, these professionals, they are appointed, and their appointments are made in the meeting of the board of directors. Next is minimum subscription. Application in the prescribed form along with the application money are received by the company's bankers. The subscription list has to be kept open for a minimum period of 3 days, and then it is closed at the discretion of the board of directors. Next comes application to stock exchange. एंड द लास्ट वन इज़ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. फाइनली ये सारे स्टेजेस क्रॉस करने के बाद शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं, उनकी वैल्यू फिक्स कर दी जाती है. एंड आफ्टर completing the third stage, raising funds stage, then the registrar can issue a certificate for the commencement of business. A private company and a company having no share capital can commence business immediately after incorporation. So प्राइवेट कंपनी को क्या है, उनको थर्ड स्टेज जो कैपिटल रेजिंग स्टेज है उससे कोई मतलब नहीं है. दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट देयर ओन मनी फॉर मीटिंग द बिजनेस, जो उसके रिक्वायरमेंट्स है वो करने के लिए अपना पैसा लगाए हैं, पब्लिक से शेयर्स या डिबेंचर्स नहीं सेल आउट कर रहे हैं. तो वो डायरेक्टली जैसे उनका रजिस्टर कर लेता है कंपनी का, उसके फ़ौरन बाद ऑपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं. बट पब्लिक कंपनी को जब उनका फंड रेजिंग स्टेज क्रॉस कर लेते हैं, कैपिटल जनरेशन के उनका क्लियर हो जाता है, देन they can be given a certificate by the registrar and then they can commence their business. A public company is required to apply for and obtain a certificate of commencement of business from the registrar of companies before it can do any business or exercise any borrowing powers. So this, the main basic difference is that public company has to undergo the 4 stages in the formation for formation of a company. A public company has to undergo all 4 stages. When it will be given a certificate of commencement of business, then only it can start its operations. But a private company के लिए 2 stages हैं. पहले वो promotion stage है जिसमें सारे like feasibility studies, then approval of name and filing of documents, registration fee, ये सारे steps करके रजिस्ट्रार को देना है. रजिस्ट्रार अगर अप्रूव कर देता है, कंपनी का नाम रजिस्टर में एंटर हो जाता है, एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, देन प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स ऑपरेशन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. हैव अ नाइस डे.